Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Aadi. I'm back with Captain Sudhir Kandhari, who's going to actually give us a little different perspective, outlook, and detail about the IMEC. How is it going to break the barrier in terms of what Bharat is going to do in the future? करने क्या वाला है हम लोग? What are we going to do? हमारा क्या प्लान है दुनिया से कनेक्ट होने के लिए? इट्स नॉट जस्ट द मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अदर प्लेसेस. तो जरा घुसते हैं. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ backstory that has not come out in the media, and let's have sir tell it to us. Sir, namaskar, good afternoon, and welcome to the show. Namaskar, Bharat, and good afternoon to your audience. पहले तो मैंने जैसे बोलना चाहा था, but now with the turn of events, कैसे शुरू करें? पहले first is that question. कहते हैं गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए. हाँ हाँ सर, वो तो आएंगे. अभी इंडिया का आईमैक बनते ही एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, कट द क्लटर, शेखर गुप्ता साहब. I think in less than 24 hours he had program के appreciating, admiring IMEC, पर साथ में ये भी बोल दिया कि it's a win-win situation for everybody. ग्वादर पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए, ग्वादर टू चाइना. In less than, I think in 12 hours he said that. I don't remember the time, but it was soon after the IMEC part of it, after G20 got over. चाइना और ग्वादर पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया यार? इसका तो एंटायर लेआउट ही बेसिकली उनको बाईपास कर रहा है. और चाइना को इस टाइम जो मैं बात करने वाला हूं, वो एक्सपोर्ट करने के लिए है क्या? पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए है क्या? और हमने जो दुनिया को देना है वो हम पाकिस्तान के थ्रू चाइना को क्यों दें यार? पहली बात तो ये, अनलेस एंड अंटिल द इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज. और वेस्ट भी तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं कर रहा है कि हम तुम चाइना की हेल्प करें हम जाकर. एक तो वो खत्म नहीं हुआ, उसके 2 दिन बाद वो टर्की से एर्डोगन साहब बावला कहता है कि the route should be through Turkey, Iraq, and the old European route he's referring to when Istanbul was known as Constantinople, that part, Istanbul. वो पता नहीं कब की बात कर रहा है. तो अभी जब अरब ट्रेडर्स जाते थे उस रूट से. Now, basically, the world requirement, the global landmass for cultivation is shrinking, Aadi. And by 2050, the world population is estimated to reach 10 billion. So food security becomes of prime importance. जो कि हमारे पास as of today also excess में है. तो हम आगे बात करेंगे हम उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं. और अगर हम ये मैप देखें, पहला मैप निकालते हैं, स्लाइड 1. अभी आप डिस्टेंस देखिए. अभी सबके सब बात कर रहे हैं मुंबई टू the UAE link part of it, the initial route. I will request the audience to give to see the distances given over here. आप मुंद्रा से अगर स्टार्ट करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 400 कितना नॉटिकल माइल, आप 300 नॉटिकल माइल सेव कर लेते हैं आप. और मुंबई वैसे भी कंजस्टेड हार्बर है जी. अगर आपको फूड लेकर आना है एक्सपोर्ट करने के लिए मुंबई से, तो आप उस फूड को मुंबई के अंदर कैसे लेकर आओगे? बिकॉज इट्स अ पेरिशेबल कार्गो. वो आगे बात करेंगे टेक्नोलॉजी की. वो जो स्पेशल टाइप के ट्रक्स होते हैं, या वो तो पहले थाने के बाहर 3 दिन खड़ा रहेगा टोल के ऊपर, उसके बाद वो ट्रैफिक में से निकलेगा कैसे? हो कोल्ड चेन. हाँ जी. कोल्ड चेन जो बनती है जी. तो उसके लिए मुंद्रा इज द आइडियल प्लेस.
अभी तक जो है लैटिन अमेरिका वाज द मेन सप्लायर टू यूरोप। तो कनाडा से भी आता था, यूएसए से भी आता था, बट लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, ये उनके मेन सप्लायर्स फूड चेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अभी आप लैटिन अमेरिका से एवरेज डिस्टेंस देखिए, 6,000 to 7,000 नॉटिकल माइल्स, और आप ये डिस्टेंस कंपेयर करिए। इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं, कॉस्ट एंड द टाइम। टाइम बिकॉज इट्स पेरिशेबल। जी। अब लैटिन अमेरिका से आप चाहे पैसिफिक कोस्ट से जाइए तो आपका पनामा कैनाल से निकलना पड़ेगा, और अगर आप साउथ अटलांटिक से जाते हैं तो लगभग डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट सेम। आई हैव जस्ट टेकन द एवरेज डिस्टेंस व्हिच कुड वेरी डिपेंडिंग ऑन व्हिच कंट्री, व्हिच पोर्ट यू आर गोइंग फ्रॉम, बट in nutshell I want to say is that this distance is much less. Now अभी जब आगे बात करेंगे तो मैं आपको मैं ऑडियंस को बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें ये टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जी। अभी हम स्लाइड 2 देख सकते हैं। अभी जो द न्यूज दैट आई हैव रेड, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट वो शेखर गुप्ता साहब बोल रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट बोल रहे हैं इसको वो अभी, पर आई डोंट नो, द न्यूज आई हैव रेड इट इज एमओयू। It is an MOU, sir. Feasibility, everything is done. In एवरीथिंग इज डन। 60 days, 60 days में इनको रिपोर्ट निकालनी है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे और कब स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ, गांव बसा नहीं, लुटेरों ने पहले नेगेटिव नैरेटिव स्टार्ट कर दिया है। वो तो सर आई एम जस्ट रोटी टेलिंग यू यार। रोटी अभी कैसे और खाएंगे सर? मैं आपको कुछ और भी चीजें पर्सनली बताऊंगा जो पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। जी। तो अभी इसको आप देखिए कि कहां से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब Piraeus, as the Greeks call it, and English we call it Piraeus, is the actual nodal point. When you come out of this place, it's one of the biggest container, what you call terminals, I would say, and the tanker terminals are also there. एक बार वहां पहुंच गए, उसके बाद आप आगे जाते हैं तो मसीना स्ट्रेट क्रॉस करके इटली चले जाते हैं बाय सी, या फिर आप क्या बोलते हैं, इटली के आगे आप चले जाते हैं मेडिटेरेनियन में, तो आपका ये मार्से और वेलेंशिया पोर्ट्स पर आ जाते हैं। तो एक तो आपको सी कनेक्टिविटी का रूट अवेलेबल ऑलरेडी है, आगे रेल रोड का ऑलरेडी 70 to 80% अवेलेबल है। हाँ, वो सिर्फ जॉर्डन का लिंक बनाना है इजराइल के साथ। तो बीच में वही बनाने का लिंक अभी। जी जी, वो भी आप बना रहे हैं बाय द वे सर। या दैट इज राइट। तो मुझको समझ नहीं आता है कि ये जो एक लोगों में अभी तक मिसकॉन्सेप्शन है कि इसको टाइम लगेगा, ये गवर्नमेंट ऐसे बोल देती है प्लान्स ये वो। अरे पहले तुम आम घर में बैठ के ये व्हाट्सएप या यहां से निकल के एक बार वहां जाके देख तो लो यार। पहले मैंने 11 साल काम किया उस इलाके में, मैं लेकर आता था अप टू पायरेस आता था मैं, फ्रूट्स वगैरह लेके। वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, दो जगह थी, या तो इंग्लिश चैनल से जाते थे यूरोप में, या फिर मेडिटेरेनियन सी के थ्रू आते थे, वेलेंशिया, लिवोर्नो, और उसके बाद पायरेस। ना अब 3-4 जगह पे अनलोड करते हैं, किस लिए? क्योंकि आप 6-7 हजार टन लेकर आ रहे हो, 2,000 टन आप एक एक जगह पे दे रहे हो, 1500 to 2,000 टन। वो फ्रॉम देयर इट इज मूव टू वेरियस पार्ट्स इन यूरोप। Now, why I'm saying these figures, this is important when we plan from India side part of it. That's why I want to make audience understand. Now, the network will support seamless movement of goods under a digital and single trade. Now, mark these words, under a digital and single trade document, and will be far cheaper operationally than the Suez Canal route. अभी जब हम बोलते हैं अंडर अ डिजिटल एंड सिंगल ट्रेड, आदि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
whichever country you go to, they will have their own immigration and customs and other laws. That phyto certificate required for the food transshipment. So if you're going to pass through 4 or 5 or 6 countries and then go to Europe, अगर हर एक country में आपको custom dues, clearance, हो गया inward काम. clearance and outward clearance, time consuming plus money. जी. और स्वेज कैनाल का तो आपको वैसे ड्यूज देना पड़ता है which are very high. So when you have a single document, it is through and through. So that is the advantage, and this is the point I wanted to bring to your audience: digital and single trade document. Can we go to slide number 3? As I said, Europe. अभी इसको देखो, यार वो लोग पागल नहीं है. ये उनका जो अपना नेटवर्क है, उन्होंने कब से स्टार्ट किया हुआ है, मैं तब से देख रहा हूं, मतलब कि they are on it. And it has nothing to do with BRI, please. This was never a part of BRI. This was a intra-Europe connectivity. Yeah. वो तो चाइना बीच में आके उसने देखा, अच्छा यूरोप में ये है, I can put my BRI quietly and use their network. That is the reason. अभी तक खाली इटली ने किया था, वो भी बाहर निकल रहा है BRI से. Correct. बाकी कंट्रीज ने, they were not bothered because they had their own network. Why they would let somebody else use their money for his gains, for that matter? जी. True. Abhi, can we go to the next slide, please? Now, ये 10T corridor जो हम बात करते हैं, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए. Facilitate rail freight carrying goods across Europe. Support economic growth. Help rail freight to compete with polluting modes such as trucks. और यहां पे आप देख लीजिए, अटलांटिक, बाल्टिक, मेडिटेरेनियन, नॉर्थ मेडिटेरेनियन, उन्होंने सब कनेक्ट किया हुआ अंदर से अपना. सबको पकड़ा हुआ है. ओके. सबको पकड़ा हुआ है. उनका तो नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड है. वो 2030 और 40 तक आई वुड से काफी कंप्लीट हो गया. एंड दे आर टॉकिंग ऑफ फ्लोटिंग सबसी रेल्स. Can you hear me, Aadi? Yeah. Floating subsea rails. I mean, it just brought me to a thought. Floating subsea rails is also a thing they are talking about between India and Saudi Arabia. That's वो भी right. उसके भी बारे में बात हुई थी. Yeah, I will मेरे come को to वो ख्याल that. दिमाग में आया. I will come to that. That's still in the conceptualization stage, Adi. Or and that may not be the first starting step. Could be 10, 20, 30 years. You see, what happens is that when you have to transship, say, I'm talking of daily supply of, on daily basis, 2,000 tons, for example, of fruits and vegetables. So if you're gonna carry a 40 feet container, refrigerated container, which roughly weighs, I would say, 20, the max what you call weight, permissible weight is 32 tons. On the average, these fruits and vegetables weigh from 25 to 30 tons. On the average, let us take it 27, 8 or 30 tons for that matter, for mental calculation. जी. Now, for 2,000 tons, you will need almost 62 or 63 containers. That will make the wagon, what you call length, number of wagons that big, maybe 30 or 40 wagons. And when you have a rail link, well, down the line, 20 years, 30 years, technology may advance further. They can have that bigger, what you call, number of
rakes in one link. But Capacity. as of now, we are talking of passengers only. But if Hmm. that comes through, I'm talking of the subsea floating. Floating means midway column of from the sea surface and above the seabed. They are talking of the speed of in excess of 600 kilometers per hour. Yes. The advantage is the advantage is there is no air resistance over there. हाँ. So if you have a speed of 600 kilometers, and we saw in our first flight, the distance is say Mundra to your Jabalari is 1898 1900 kilometers. In 3.5 hours, you're right over there. In less than 4 hours, you're at Jebel Ali. Norway में they under construction and part it is completed for their own what you call intra-fjord islands, what you call that to connect those parts. They have already completed construction, I think 80 or 100 kilometers for that matter. And here also, part will be connected by subsea floating rail link. When Europe had already planned it so long ago, they had the future and they had India in their mind because they know very well. जीने के लिए खाना तो चाहिए ही चाहिए. As I said, the global landmass for cultivation is shrinking. Food security is the next thing. And imagine if you have that power in your hand. और कुछ any questions here, Adi? No, this is it's a एक चीज है सर. हाँ. Actually, if you look at it, but यूरोप ने भी इसको डिवाइड करा है. जो मैं actually I was reading, इसमें इतना obviously दिखेगा नहीं. It's a smaller map. I was going through the larger this thing. Uh, they are also divided into three segments, which is Western Europe, Central Europe, and Eastern Europe. That is right. Right? तो Western Europe में अगर आपको कुछ डालना है तो you can go to France. वहाँ पर Nice cheese and all that stuff is there. Yeah. Central Europe में you can go into Italy and वहाँ से पूरा आपका Germany निकल जाएगा. Poland तक at least you can hit that place. Yeah. And Eastern Europe आप Greece से निकलो, you can hit ये पूरा all the Baltic states, ये वो पूरा you can get the. मैंने इसलिए बोला उन्होंने पायरेस को क्यों चुना है. चाइनीज ने अच्छा काम किया, पायरेस का पोर्ट बना दिया. यूज हम करेंगे. नहीं, there was a devil in their mind. That's correct. When you do a thing with a bad intention, it's gonna come back and hit you. अब पायरेस का बना दिया उन्होंने. मैंने एक प्रोग्राम पहले किया था कि China's presence in Mediterranean. With this economy, they cannot sustain those ports. If you remember, I had done with you that the program at that time. And West will never let them dominate Mediterranean part of it for their strategical advantage. They will never let go. Initially, when I used to go there, I thought the Chinese are taking over, but later on, slowly, I realized it's not so. That's why they've chosen a Port Piraeus. As I said, अगर आप वहां से पीरियस से निकलते हैं, आपका पहला आ जाता है सिसिली, वो जो मसीना स्ट्रेट के थ्रू निकलकर फर्स्ट मेजर पोर्ट कम्स इज लिवोर्नो. उसके आगे मार्से, उसके आगे वेलेंशिया पोर्ट है. वेलेंशिया स्पेन में है. वेलेंशिया के आगे कार्टेगेना पोर्ट है, वो भी स्पेन में है. सेन होसे है, वो कार्टेगेना से खाली आई थिंक 110 odd kilometers, not more than that by sea, 50, 60, 70 odd nautical miles. So that coast is full of ports. अब मैं आगे कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जैसे मैंने कंटेनर्स का बताया है कि आप एक्चुअली फीडर कंटेनर वेसल से ये सबको जाके दे सकते हैं और थ्रू एंड थ्रू आगे चलता रहेगा. जैसे अर्ली मॉर्निंग हमारे कंट्री में सुबह 4 बजे 5 बजे
वो छोटे ट्रक आते हैं वेजिटेबल्स का लेके मंडी से चल के, इज गोना बी समथिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम फॉर यूरोप. आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड आदि. Oh, here is the link. If your audience they really want to see the conceptualization of subsea floating Yeah. tubular whale. Mm-hmm. This is that intro video, na sir? Pardon? This is that introduction video, or which has been released some time ago. Is that the same one? Yeah, They've done a digital this thing of how this rail link that's will be there. I've seen digitization this. of the entire thing, and Yeah. that, see, Norway and all, they're already going ahead with this. Europe, they're going ahead with this. Here it is the conceptualization stage. जी. See, Adi, I have almost 12 years of experience in subsea construction work. लोग बोलेंगे यार ये ख्याली पुलाव है, नहीं बन सकता. यार, everything is possible. Subsea construction is time consuming, bit expensive, initial investment is high. But when Norway is investing $40 billion and they expect to get profit of $50 billion in first 10 years. जी. ठीक है. आदि थोड़ा स्लाइड्स का मिसमैच हो गया मेरे ख्याल से. No problem, sir. Yeah. Now this is the one which I was talking of, global land use for food production. This is just for the info of the audience to comprehend what I'm saying, the global landmass and population of 10 billion by 2050, और एग्रीकल्चर कितना हो पाएगा, लाइफ स्टॉक कितना होगा, और वहां पे इंडिया की इंपॉर्टेंस क्यों आती है. दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. Should I move, sir? या नाउ अभी इफ यू लुक एट दिस, इंडिया टॉप्स नॉट परसेंटेज वाइज स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. और परसेंटेज में 53.7% of our own land mass. India economy is basically agriculture economy, and agriculture had been the most neglected sector, I would say, in India. Our agriculture contributes 17 to 18% of our GDP. All we need to is bring it up to 30 to 35% and see where we go thereafter. And which is very much achievable. As we आगे बात करेंगे तो उसमें चलते हैं. फिर उसके बाद मैंने टॉप 5 कंट्रीज का नाम दिया है. If audience want, they can Google, they can get the list of 20 odd countries, but those are insignificant numbers. चाइना का हम बात कर रहे हैं, that we have already covered. Adi, उनका land mass is messed up. They cannot have much of agriculture. Already 80% import है उनके food का, वो बढ़ता ही जाएगा. आगे चलें. आगे next slide. Yes, sir. Now this is a interesting part. In 2021, the first time in 15 years, India surpassed Brazil to be the top food supplier to Arab countries. For all those naysayers, I will say, open any source, I would say, and have a look at it. Brazilian shipments to Saudi, which took 30 days earlier, now they are experiencing a delay of up to 60 days.
और कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट की शेल्फ लाइफ जो है 32 डेज से ज्यादा नहीं होती है. I will explain that what is shelf life and how we extend the life of the raw vegetable and raw fruit. Now, India's geographic advantages allow it to ship fruits, vegetables, sugar, grains, and meat in as little as a week. I am saying within 7 to 10 days, you can send it to the center of the Europe. Now, here comes That's the interesting. second thing. Why this government is going to, this is an important thing I'm going to tell you now, is trying to develop relations with Latin America. April, I think Jaishankar Saab visited there. Yes, sir. Yeah, Latin America and Caribbean, they have a council kind of a thing, Hmm. a think tank kind of a thing. You can say a policy maker for their agriculture. We haven't got any that kind of a study work, an organization to do that kind of a study work yet, I would say. हमारा APDA are all armchair guys. They don't know the practical aspect of it. And I said the agriculture engineering is the most neglected engineering in India. Now that has to change. Going abroad, all these guys used to go to Brazil, Argentina, what for agriculture tour, study tour, and they come back with not results. They couldn't implement even a single thing. But I'm hopeful this government is going to implement all those things now. Can you move to the next slide? Adi, if you look at it, just with 1.6% of vegetables and negligible amount of fruits, we are still able to export. This is for the reference of audience. We'll come to the more interesting part, how we are going to export. These things are going to go multiplier by a multiplying factor in the export part of it. Can you go to the next slide, please? This is our trade in million US dollars. Financial year 2023. Have a look, the weight has increased, almost doubling up from the year 2015. Isn't this signs of progress? Hmm. Can't we say that we are slowly graduating to being a food giver to other countries? The Akshay Patra. Can we go to the next slide, please? This we have seen this slide. Now, advantages that we have over Latin America. We have spoken about it. Number 5 point. India's growing middle class represents a significant consumer base, which can drive government or private investments in agriculture, technology, safety, and quality control. Now, when I say quality control and technology, Adi, I will just take 5 minutes. I will not go very technical into it. Why we talk of technology over here? In India, 30% food is wasted. So not food, fruits and vegetables. Fruits. Why it is wasted? No technology, no infrastructure. आप किसी मंडी में जाइए, पैरों के नीचे दब रहा है, ट्रक के पहिए के नीचे आ रहा है, वो कार्ट व्हील पुलर है,
उससे गिर रहा है, किसी और चीज के नीचे आ रहा है। आपका लोकल वेंडर जो है, जो मंडी से लेके आता है, फॉर एग्जांपल वो 50 किलो लेकर आया, आप उसको चुनते रहते हो इस तरह से, कौन जी सा अच्छा पीस है इसमें से। उसमें से 10 किलो फिर वेस्ट हो जाता है बेचारे का 50 किलो में से। अब उसको 10 किलो रिकवर करने के लिए कॉस्ट बढ़ानी बढ़ानी पड़ती है, वो मंडी वाले को भी कॉस्ट ऊपर करनी पड़ती है। तो आपका जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट, वो और महंगा होता जाता है। इसको कैसे रोका जाए? मैं ये नहीं बोल रहा, लोग बहुत गलत फहमी डालते हैं कि क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार, मेंटेन डिग्निटी ऑफ लेबर प्लीज। जो आदमी कंधे पे बोरी उठाता है, उसको आप एक पैलेट जैक, जो हैंड ऑपरेटेड पैलेट जैक होता है, उसको आदि वो दे दो, वो उससे उठा के रख देगा, पैलेटाइज होगा, आपका वेस्ट भी नहीं होगा। जहां पे आपको फोकलिफ्ट ट्रक चाहिए ट्रक में डालने के लिए, वहां पे आप यूज कर रहे हो मैनुअल लेबर। गिव देम forklift truck, they can drive, pick up the pallet and put inside the truck. अब इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो कौन लेकर आएगा? प्राइवेट प्लेयर्स। नो, आई एम सेइंग प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट। करेक्ट। फिर जब तुम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हो, तो सब कुछ अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, टाटा को दे दिया, ये कर दिया। एक महाशय तो ये बोलते हैं, आलू डालो सोना निकालो। अरे आपको मतलब भी है, ये पेरिशेबल कार्गो है। जब हम वर्ड पेरिशेबल यूज करते हैं आदि, ये प्रोड्यूस जो है, इट्स ब्रीदिंग, वो एक इंसान की तरह सांस ले रहा है जी जब वो राइप करता है। तो उसका एक बार राइपनिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा, उसका नेक्स्ट स्टेज होता है रॉट। और रॉट होने के बाद आपका ग्रीन हाउस एमिशन एंड एवरीथिंग, मीथेन गैस निकलती है उसमें से। तो इस सब को ठीक करने के लिए, एक तो मैं पहले बोलूंगा कि जो हमारा ये नीति आयोग वगैरह सब है, यार, वी शुड हैव क्वालिफाइड पीपल। अभी एक डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, मैं टेक्नोलॉजी में आ रहा हूं आपके ऑडियंस को समझाने के लिए। एक हम यूज करते हैं वर्ड कैलमन फिल्टर एंड लीस्ट स्क्वायर एरर। कैलमन फिल्टर इज बेसिकली अ डायनेमिक इक्वेशन एंड लीस्ट स्क्वायर इज बेसिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड एंकर पॉइंट। आप पिछले 10 साल का डेटा ले लो, with all the variable factors like weather, consumption, season, वो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्शन दे देगा, एंड विच इज वेरी एक्यूरेट। सब जगह वो यूज होता है, स्पेस से लेके जीपीएस में सब जगह पे कैलमन फिल्टर और लीस्ट स्क्वायर यूज होता है। आपको जब ये पता चल जाए कि डिमांड मेरी इतनी है और मेरी इतनी सप्लाई होनी चाहिए, तो आप राइप राइप फ्रूट या वेजिटेबल नहीं लेकर आते, आप उसको a notch before ripening stage, that is the thing is still raw, you bring it and store it. स्टोरिंग में क्या करते हैं? टू एक्सटेंड द लाइफ, हर एक प्रोड्यूस को उसका एक अंदर का हीट होता है जिससे वो ब्रीदिंग करता है, जैसे हमारे बॉडी का हीट होता है। देन वी हैव टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, एक केले की लाइफ जो 2 दिन नहीं होती है, यू कैन एक्सटेंड टू 28 डेज। अगर आपके पास 28 डेज का सामान है, उसके लिए आपको वेयर हाउस भी चाहिए, उसके लिए आपको रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स भी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के साथ CO2 O2 लेवल मेंटेन करना पड़ता है, जो कि कंटेनर्स में हम वेंटिलेशन सेट कर देते हैं या रेफ्रिजरेटेड कार्गो वेसल्स में मॉनिटर करते हैं और वेंटिलेशन अकॉर्डिंगली करते हैं और टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली कंट्रोल करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन द giving air temperature and the return air temperature should not be more than 0.02 degrees centigrade. That is the accuracy of the system required. अब आपको वो टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, आप वो कहां से लेकर आओगे?
आप गवर्नमेंट तो ही कर नहीं सकती, ये तो अडानी जैसा लोग ही कर सकता है, अंबानी कर सकता है इन चीजों को. देन पीपल से कि स्मॉल टाइम फार्मर्स का क्या होगा, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स. यार देयर इज समथिंग नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग. आप स्मॉल टाइम फार्मर्स को, स्मॉल लैंड ओनर्स जो हैं, उनको कोऑपरेटिव फार्मिंग दे दो. अमूल की है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको विलेज टू सिटी, सिटी टू द स्टेट एंड स्टेट टू द पैन इंडिया नेट कनेक्टिविटी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है. और मैंने बोला मॉडल अवेलेबल, आपको पता है कितना डिमांड कितना सप्लाई चाहिए. यू कैन प्रिडिक्ट इवन के मॉनसून कैसा होगा इस साल by using weather models, by the same mathematical equation models, I would say. आपका सारा वेदर वो वेदर वर्टिकल फोरकास्ट उसी पे डिपेंड करता है. दे कैन इवन प्रिडिक्ट कि एल नीनो इस साल आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज एल नीनो इज द वन व्हिच अफेक्ट्स मॉनसून्स इन इंडिया. फिर लोग बात करते हैं जी हमारे पास पानी नहीं है. अरे डिसैलिनेशन प्लांट लगाओ ना यार, ब्रैकिश वाटर को बनाओ तुम फॉर इरिगेशन पर्पस. तो इस सब टेक्नोलॉजी के लिए आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर इज अ मस्ट. ये कोई नहीं बोलना चाहिए कि बेच दिया यार. गेट ओवर दैट सोशलिस्ट माइंडसेट, ब्लडी कैरिंग अ वियतनाम रोज इन योर पेंट्स एंड टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म ऑल द टाइम. यार स्मॉल टाइम फार्मर्स को गिव देम, लेट देम कंट्रीब्यूट. Look at India's power, how our power will go, and bargaining and negotiating power grows with other Western countries if we are the food supplier. Yeah. And I'm sorry to say at this stage, Aadi, our government is not able to convince the masses. वो तुम्हारे जो एक्टिविस्ट वगैरह हैं, एनवायरमेंटलिस्ट बनते हैं अपने आप को, यार एक बीए की डिग्री की है, एक लॉ की डिग्री की है. What do you know about agriculture engineering, I would say? तुम कुछ करो पहले वो सड़कों पे आ जाएंगे. Anyway, can we go to the next slide? This was a bit of technology I wanted to speak about. अभी आप देखिए कि एप्पल आपका हिमाचल से आता है. मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं, समझो इस बात को यार. ओपन ट्रक में आता है गर्मी के अंदर. कितना वेस्ट होता है? दैट्स व्हाई 30% इज वेस्ट. अगर आप 30% वेस्ट व्हाट यू कॉल सेव कर लो, like when I was carrying this refrigerated what you call perishable goods, we used to talk of zero damage. Zero damage क्योंकि उस लाले का पैसा जाता है. सरकारें ऐसा काम नहीं कर सकती. दिस हैज टू बी प्राइवेट एंड जॉइंट वेंचर. आपके इंडिया में 64 टाइप के एप्पल्स हैं एंड यू आर गोइंग अब्रॉड टू लर्न 4 टाइप के कौन से एप्पल वैरायटी है. We have the potential and we can do it. Food export would boost India's economy and increase its influence in international trade. हमने बात की है, food security is a critical concern for most countries. Yeah, especially going forward. Yeah, and modernization of our agriculture sector in order to meet ever-growing exports. यहाँ पे एक मैं बात और करता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं. आदि वी हैव टू ब्रिंग इन दैट. वो एक्टिविस्ट पहले खड़े हो जाते हैं कि इट विल बिकम पेस्ट रेजिस्टेंट, इट विल डू दिस, इट विल डू दैट, एंड दे विल कोट सम स्टडी. Out of 26 countries, I think 10 odd countries in Latin America are using biotechnology. 2 in North America, 6 in Africa. Why can't we use? The purpose of biotechnology is to give maximum yield from a minimum mass of land. वो 30-40 साल से कर रहे हैं और हम यहाँ पे हर एक चीज में इसका ये नुकसान है, इससे ये हो जाएगा. यस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Cavendish type of banana is the cloning process. There are no seeds for that. World over वो बनाना यूज होता है इंडिया को छोड़ के.
इंडिया में भी आता है, आप देखोगे वो चेपी लगा के आपको मिलता है मार्केट में, लोग खाते हैं उसको। Apple भी. एप्पल भी। एंड ट्रस्ट मी आदि, आई हैड कैरिड ऑल दिस what you call produce in India. What you're getting, you won't find the bottommost one entry in European and West market. Just the stuff we are getting is used for fruit concentrate, pulp, jam and marmalade and etc. Not for any other purpose. Let us not be a dumping ground. Let us come out of that, introduce technology, modernize it. I'll give you an example. मैं आपसे बात भी कर रहा था पहले। अडानी साहब ने 2003 में कोशिश की थी स्टार्ट करने की। He gave up. उस टाइप की गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी, ब्यूरोक्रेसी ऐसी थी, ये आगे चल ही नहीं सकता था, और वो चलने भी नहीं देंगे जो पुराने लोग थे। अरे पैसा नहीं बनता ना आदि, हम्म। फार्मर्स को बेवकूफ कैसे बनाओगे? एक गमले में तो तुम गोभी उगा के टैक्स अवॉइड कर देते हो। व्हाट आई वुड से इज दैट give subsidies to farmers, do everything, but give them their respect too. Educate them. When you do cooperative farming at the district, at the city level, there should be guys and telling them what to do with the land and how to grow. अगर आपको सुपर पावर जैसा एक स्टेटस लेने का है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंडियंस वी डोंट बिलीव इन सुपर पावर, वी जस्ट बिलीव इन बीइंग स्ट्रांग एंड हेल्पिंग अदर्स. Now, India would gain regional influence on the geopolitical stage, equipping us to be in a position where we can actively negotiate with our neighboring countries. अब आप टेररिज्म की बात करते हो, जब वहां पे खाना नहीं होगा और तुमको बोलेगा मुझको खाना दो, हाँ भाई ले ले खाना यार, देने को तैयार हो, तू ये काम बंद कर दे बस. It's as simple as that. मर जाएंगे सर, वो बंद नहीं करेंगे. अब वो उनकी किस्मत है, फिर वो यार वो उनकी किस्मत है. बाकी नॉर्मल मैन, वो आर्मी जो मर्जी कर ले यार, नॉर्मल मैन इफ ही कम्स ऑन द स्ट्रीट, दैट्स द एंड ऑफ द पाक आर्मी आल्सो. Last point is China is exposed to Europe. Europe will now have a direct competition. Considering the volatility of China's communist regime, more and more European countries will prefer relying on countries like India for their food supply. चाइना का तो फूड सप्लाई हाई नहीं, क्यों? तो खुद 80% इंपोर्ट करता है. बाकी उनका मैंने सारा बताया आपको पहले भी कुछ प्रोग्राम में, उनका सब कुछ खत्म होता जा रहा है. Can you have the next slide, please? Yes, sir. Why is this? Just Okay, give me a this is the second. last. It seems to be stuck. 1 second. Yeah, no, that's it. Yeah, I was wondering these the slide got stuck or something. are the points I wanted to make, and I hope मैं ज्यादा नहीं सर, this टेक्निकल. is नहीं, ये आपने जो बताया है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये आपने जो बताया, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट व्हाट योर the game is about a long term food security plan, because I think as a consequence ये जो यूक्रेन का जो गड़बड़ हुई है, इन लोगों को ये तो पता है यार, यूक्रेन इज नॉट गोना गिव एनी मोर ग्रेन. अगर कोई भी जीत जाए, यूक्रेन तो गया, तो वी हैव टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव कहीं ना कहीं यार, नहीं तो मरेंगे हम लोग. यार देख, ऐसा आदि के ये जो यूक्रेन की वॉर है, जी. एक लाइन हम रीड नहीं कर पा रहे हैं बीच में. Almost a century ago, Sir McLander, if I remember the name correctly, is a geographer and economist. He had written, the one who controls Central Asia, which are the 5 countries now, will control the world. अभी एर्दोगान क्यों बोल रहा है सेंट्रल एशिया? इफ यू लुक एट इट,
क्योंकि एक रास्ता सेंट्रल एशिया का वहीं से है ना यार। वो सर अर्डोगान का तो आर्गुमेंट ही टेढ़ा है, मैंने कल अपने शो में बताया था। वो रोड बोलता है इराक, वो रेलवे इराक में से बनाएंगे, ये करेंगे। अरे इराक इज कहाँ भाई। अनस्टेबल कंट्री यार, अनस्टेबल कंट्री, वहां से कौन बेवकूफ लेके जाएगा। अब उसको शोर मचाना है अपनी रेलिवेंस के लिए, यार तुम कुछ शोर मचाते रहो। वो एग्जैक्टली। हाथी तो चल रहा है, तुम अपना जो पीछे बीच में बोलना बोलते रहो यार। हाथी की तो मस्त चाल है, वो चलता रहेगा अपनी चाल। अभी सेंट्रल एशिया, वो टर्की जो है, मैं वो बोल रहा ना कि लुटेरे आ गए पहले, गांव बसा नहीं। इनको गांव के बाहर के पेरीमीटर से ही बाहर रखो इन लोगों को यार। हाँ। तो सेंट्रल एशिया को तुम, एक टर्की ने अपना एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज बना लिया बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनल्स के चक्कर में यार। जी। अगर आपको इतना ही शौक है, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी स्ट्रेट यार। अगर रशिया को, इफ रशिया इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल सेइंग के ब्लैक सी मैं ले लूंगा, ले लो ब्लैक सी यार उसके। और मेडिटेरेनियन में तुमको तो आना पड़ेगा यार। तुम आओगे तो तुमको तो मसीना स्ट्रेट क्रॉस करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। तो ये डिपेंड करता है, सब वेइंग बैलेंस, किस तरफ वेट ज्यादा, अगला आदमी अपना उसका काउंटर डालेगा दूसरी तरफ यार। हाँ वो तो आपको फिर जियो। सेंट्रल एशिया में जाना है, फाइन जाएंगे। तुम अपने आप रास्ता दोगे जब मेरे पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर हो। वो तो फिर जियोपॉलिटिकल गेम बन जाएगी ना सर। या दैट करेक्ट। इज ट्रू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आपको ये जो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में हो रहा है, मैंने एक बार पहले भी आपको बोला था, या वो ईटीएम जो है वो एक स्टैंड बाय वेपन रखा हुआ है यूएसए ने अपने पास इस टाइम पे। और तालिबान जो है, उसको जब आपसे एडवांटेज मिलेगा, वो पाकिस्तान या चाइना के पास क्यों जाएगा यार। वो आपको रूट दे देगा। यू डोंट फाइट विद देम, डोंट किल देम, जस्ट मेंटेन गुड रिलेशंस। इंडिया इज मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद तालिबान। बैकडोर डिप्लोमेसी जो मर्जी बोल लो। और उसका दूसरा ऑल्टरनेट रूट कोई नहीं है। इंडिया का ईरान से रिलेशन अच्छे हैं। हम्म। तो एर्डोगान जो बोलना उसको, वो जिसको बोलते हैं ना कि आदमी पगला जाता है इन फ्रस्ट्रेशन एंड डेस्परेशन, ही कैन स्पीक एनीथिंग। अरे व्हाई शुड आई टेक माय रूट फ्रॉम व्हाट यू हैव टू ऑफर मी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। द ओनली थिंग यू कैन ऑफर मी इज द काउंटरफिट आइटम्स फ्रॉम चाइना। वो भी सर, इफ यू एक्चुअली, आई मीन इफ इन केस द इराक रोड कम्स अप, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, आप बोल रहे थे कि वहां पर वो प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है। इन केस इट, इन केस इफ इट कम्स अप आल्सो, इट इज एन ऑल्टरनेट रूट फॉर अस, बिकॉज टर्की का जो आप मैप देखिए जो मांग रहा है, उसका भी ओरिजिन पोर्ट कहाँ है? बुंद्रा। तो उसको तो आना ही पड़ेगा यार। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके चक्कर में क्या सऊदी अरेबिया और ये तुम्हारे मिडल ईस्ट जाने देंगे आपको? कैन टर्की मैच सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट इकोनॉमिकली? ना 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 पैसा ना। किसके पास ज्यादा है? अगर ये सब सी ट्यूबल और रेल, और मैं जैसे बोल रहा हूँ मुंद्रा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आदि, कम से कम 400 रेफ्रिजरेटेड ट्रक चाहिए राउंड द क्लॉक सर्व करने के लिए। जी। और कम से कम उसके बाद आपको एक वेयर हाउस भी चाहिए, जैसे मैंने बताया, स्पेशली टेम्परेचर कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल। और उसके बाद अभी आप ये देखिए कि दिस रूट इज स्टिल ओपन यार, शिप्स चल रहे हैं। अब 2000 टन भेजने के लिए 60 कंटेनर के लिए आप छोटे से छोटा कंटेनर जहाज भी ले लो, 300-500 जो टीयू का कंटेनर होता है, वेसल होता है, फीडर वेसल, वो 60 कंटेनर। और बड़े जहाज तो 18,000 20,000 21,000 टीयू की बात करते हैं हम लोग। वो जहाज आपका खाली 60 कंटेनर लेके क्यों जाएगा मिडल ईस्ट? उसका रूट डाइवर्ट करना पड़ेगा 60 कंटेनर के लिए, और वो कंटेनर खाली वापस आना इंडिया। तो उसके लिए आपको एक 10 डेडिकेटेड 40 फीटर कंटेनर वेसल चाहिए, जो मैक्सिमम कैपेसिटी 100 के हो। 75 मिलियन $100 मिलियन का एक जहाज बन जाता है। एक ट्रक जो है वो 1 करोड़ का आएगा, बोला जिससे जो जी। ट्रक की जो होते हैं इस ट्रेड में। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि यार ये जो है सप्लाई चेन जो है, ये प्राइवेट वेंचर ही कर सकता है।
And let me tell you a secret, I was offered a job by Adani in 2003 to set up the infrastructure. I refused because I knew it will never come up, knowing the bureaucracy of that time and the government that time. These things, if has to be done, and at the moment, and next 23 years, I would say Middle East, KSA, Jordan, Israel, Piraeus is the best route, Option. best option at the moment. यार कुछ तो सोच के गवर्नमेंट ने भी एग्री किया होगा यार, ऐसे थोड़ी है कि और एर्डोगन को मना कर दिया, नाम नहीं आया तो आज कश्मीर का शोर मचा रहा है बैठ के वही। वो ना सर पागल है वो, थोड़ा सा उसको ना नेगोशिएट करना नहीं आता सर। अभी आप चाइना की बात कर रहे हैं, लोग चाइना की बात कर रहे हैं, जैसे वो क्या नाम है आपका, शेखर गुप्ता ने बोला था, तो चाइना कहां से फिट हो जाता है इस रूट के अंदर, पहले ये बताओ यार। ग्वादर टू चाइना, अरे कौन सा रूट की बात कर रहे हो, अभी तो ग्वादर ही पूरा, आई वुड से नॉट काइंड ऑफ द वे ऑपरेशन वी टॉक अबाउट। बलूच तुमको बीच में ठोक रहे हैं, टीटीपी वहां ठोक रहे हैं, तुम कौन सा रूट बनाओगे चाइना तक क्या? एंड व्हाई शुड वी इंक्लूड चाइना एंड पाकिस्तान? फर्स्ट ऑफ ऑल, जमीन मेरी, फसल मेरी, ट्रीटीज अंडर एमओयू मेरा मिडिल ईस्ट के साथ, और मैं उनको बिना बात के इनविटेशन देने आ जाऊं, तुम भी ज्वाइन कर लो बीच में। Yes, Adi, anything more about this? No, this is, I mean, it's quite an intriguing subject. से बड़ा मजेदार subject है, because मैं तो आपने देखा ही है, मैं I've been covering this stuff because इतना maritime उसमें जाता नहीं, but I've been talking about the geopolitics of these trade routes, which Yeah. is amazing. अभी तो आप वो northern route के बारे में भी I spoke about it, which is going to be another big thing. Yeah. Because northern route will reduce the entire distance by 8,000 kilometers. और उसमें ना So, एक थोड़ा सा नॉर्दर्न रूट में एक हल्का सा डिसएडवांटेज है, द सीज एट दैट लैटिट्यूड आर वेरी रफ राउंड द ईयर। हाँ, उसके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना सर अभी वो। उसके लिए आपको स्पेशल टाइप के वेसल्स एंड I would say, like, you know, I used to carry at times kiwis and apples from and oranges from New Zealand to English Channel ports. As I will share with you, there's a quality of kiwi by the known as kiwi gold. Way back in 2002, 2003, the cost of one piece of kiwi gold was $25. Wow. That's why we used to talk of zero damage, zero loss. क्योंकि वहां पैसा जाता है लोगों का, वो प्राइवेट वेंचर्स आना जरूरी है बेसिकली, और कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अ मस्ट इन इंडिया ऑन द लाइंस ऑफ अमूल फ्रॉम मिडल टू द स्मॉल फार्मर, फार्म लैंड होल्डिंग फार्मर्स। वो अभी हम क्या बात कर, क्या पूछा तूने, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ा डेविएट कर गया। नहीं, I mean the नॉर्थ रूट का, तो न्यूजीलैंड जब जाते थे तो we used to say if anybody can sail around the New Zealand can sail anywhere in the world. If we have sailed once down the Cape Horn, that is the Argentina Chile का टिप जो है नीचे अंटार्कटिका के ऊपर, twice I had been through area, trust me. Once so, like, you know, I had to heave to my vessel. The weather was so bad and I couldn't make headway, just headway of 3 knots maximum I could make, and avoiding the waves and the, you know, sea conditions. I almost reached the bloody sea limit here because the charterer wanted to save the money to transit through the Magellan Strait, which is between Chile and Argentina, from Pacific to Atlantic. So sailing in those latitudes and in those weather conditions, there are very high risk of cargo damage. So you have to have special type of arrangement for that. That's a slight disadvantage, I would say. Many a times the route looks shorter, but then you realize you have consumed more fuel and damage to the vessel and the cargo is much more than what you would have otherwise.
थोड़ा सा उसमें है Mhm. डिसएडवांटेज, बट नॉट दैट यू कांट मैनेज. You can select the weather, and the weather, with the weather forecast, with a high powered vessel, you can go. हाँ सर, कुछ तो स्टडी किया ही होगा सर, तभी तो आप इसमें घुस रहे हो. आई मीन, one thing which is there that these guys have been the kind of study which has been happening about these trade routes, because Yeah. we can see the kind of focus coming out on the trade. And as a matter of fact, hamara the exports are also going up, so Yeah. it's almost 36% up in the past 2 years. 2 years. तो वो तो दिख रहा है आपको. तो I mean, if that is the case, then you need to have multiple trade routes going all around the world. That वो is तो true. चाहिए We have. आपको, otherwise it doesn't make sense. Yeah. Because internal consumption से तो उतना ही कर पाओगे ना. To increase the capacity, you need a external trade route to kind of uh, That has to be you there. know. That is why Russia is very, very much part of what you call each and everything on the quiet on surface. They may have what you call differences with USA and all. यार वो फर्टिलाइजर्स भी यूएसए खरीद रहा है, ऑयल भी खरीद रहा है, लड़ाई भी चल रही है, ये सब चल लड़ाई वगैरह चलती रहेगी यार. बिजनेस इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर इन दिस केस. नहीं, ये तो फिर लड़ाई तो सर ऐसा है, दिस इज टाइम पास मेरे वो तो हिसाब से तो. ये यहाँ भी होगी, सेंट्रल एशिया में भी होगी, सब जगह होगी, वो चलता रहेगा. बाकी ट्रेड विल गो ऑन. वो तो है सर, एब्सोल्युटली. Sir, fantastic. Thank you so much for taking out the effort and doing this. Always a pleasure. This time we could not do a live because we've already chalked out this week, but we'll get you in for a live for a next subject, I'm sure. Sir, ये थोड़ा trade routes के ऊपर I think आप थोड़ा सा deep dive करेंगे तो it'll be good for us to understand I'll get from back to you. somebody who's sailed the seas. It'll be easy for us to kind of grasp कि यार what are the challenges, what are the opportunities, and what are the benefits that will with each one of these trade routes. Just the maritime aspect of it will be really really nice. So I'll hope if you can Yeah, help sure. us understanding that will be great, sir. But in any case, thank you so much, sir. Till next time. Jai Hind. Thank you.